हाय फ्रेंड्स मु पपुन आपन को स्वागत करछि फाइंडर्स ऑफ यूट्यूब चैनल रो आउ एक नवा वीडियो को। तो ये रहउछि आपन फार्मासिस्ट एमसीक्यू आपन वीडियो नंबर 10 पार्ट 10 रहउछि। तो जेमिति कि आपन माने कहिथिले सब्जेक्ट वाइज करिया पय हमरा अभी सब्जेक्ट वाइज आपन चलीछि। तो ये रहउछि आपन फार्माकोलॉजी रो 3 नंबर वीडियो पार्ट 3। तो चलंतु वीडियो को कंप्लीट भाबरे देखंतु। जदि चैनल को नुआ आछंती एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऊपर क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को मध्ये ऑन कर दियंतु। समस्त जॉब नोटिफिकेशन एप्लाई ट्यूटोरियल सहित फार्मासिस्ट एमसीक्यू मध्ये आपन माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। जो माने पूर्व वीडियो सब देखि नांती डिस्क्रिप्शन को जानतु सेतिर आपन लिंक पाई परिबे। डिटेल्स फास्ट आपन लास्ट पर्यंत जेतिक भी वीडियो हमर पब्लिश छि सब आपन माने सेटा देखि परिबे। तो चलंतु आज रो क्वेश्चन देखिबा। थेराप्यूटिक रेंज इच एंड रेशियो ऑफ therapeutic range each and ratio of आपनकर ऑप्शन रहउछि टॉक्सिक डोज एंड therapeutic dose and percent of response, toxic dose percent of toxic response एवं none of the above। तो अपन जो थेराप्यूटिक रैंक रहउछि इच एंड रेशियो ऑफ कोन कहबा हमें याको। तो आपन राइट आंसर रहउछि टॉक्सिक डोज एंड थेराप्यूटिक डोज। इट इज द रेशियो ऑफ टॉक्सिक डोज एंड थेराप्यूटिक डोज माने जोथिरे थेरापी एवं टॉक्सिसिटी मिले सही डोज को हमें कोन कहबा थेराप्यूटिक इंडेक्स रेशियो कहा जाय। ठीक अछि। ए ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड a drug that decrease the activity of another drug is called ताको हमें कोन कहबा सही ड्रग माने सेमिति ड्रग जे अन्य ड्रग रो एक्टिविटी को डिक्रीज करे ताको कोन कहबा एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट एडवर्स रिएक्शन सिनर्जी। तो राइट आंसर रहउछि आपनर एंटागोनिस्ट। फर्स्ट ऑप्शन रहउछि आपनर राइट आंसर। ए ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एफिनिटी इज a measure of एफिनिटी आपनकर ए मेजर ऑफ एफिनिटी आपनकर कोन ड्रग बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, ड्रग बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर, इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ए ड्रग, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग। रिसेप्टर को जो ड्रग बाइंड करे ताको हम कोन कहू एफिनिटी। एफिनिटी ताको कहितो। तो एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ एठी आपनकर रहउछि माने आपन राइट आंसर कोन रहउछि एठी देखंतु ड्रग बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर। आपन जो सेकंड ऑप्शन रहउछि ये होछि आपन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन आपनकर कोन रहउछि ऑप्शन देखंतु cumulative ability of a drug, hypersensitivity to a drug, fast tolerance developing, intensive increase of drug effect due to their combination। पोटेंशिएशन माने आपनकर कोन सुक्राल एडिटिव रहउछि आपनकर पोटेंशिएशन रो अर्थ। तो एटा आपन जो राइट आंसर रहउछि इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन माने आपनकर ऑप्शन 4 रहउछि राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल आर कॉल्ड। फेज 4 जो क्लिनिकल ट्रायल्स रहउछि ताको कोन कहआ जाय ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन, थेराप्यूटिक कंफर्मेशन, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स आपन रहउछि एनिमल्स देन क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल जो आपन रहउछि एनिमल्स पई देन आपन क्लिनिकल ट्रायल्स रहउछि सेथिरे आपन माने पढिथिबे फेज रहउछि आपन 0 टू 1 2 3 4 रहउछि। तो एठी आपन कहउछि फेज 4। फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स आपन कोन कहआ जाय ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, थेराप्यूटिक एक्सप्लोरेशन, थेराप्यूटिक कंफर्मेशन बा पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। तो राइट आंसर रहउछि आपन ऑप्शन 4 पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकोमिलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड इज। फोकोमिलिया आपन रहउछि माने आपन माने देखिथिबे न्यूबॉर्न बेबी रो केते बेले गोड़ हाथ छोटो होय जाय जेतेले न्यूबॉर्न बेबी हे तार गोटे हाथ छोटो होय जाय किबा गोटे गोड़ छोटो होय जाय कि दीटा गोड़ मध्ये तार छोटो ताको कोन कहआ जाय फोकोमिलिया। ये फोकोमिलिया रो एडवर्स इफेक्ट रही थाए। तो फोकोमिलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड इज shortening of upper or lower limb, patient is not able to see bright light, patient is not willing to enter dark room एवं none of the above। तो हम आपन को प्रथम रो बुझाई देछि फोकोमिलिया माने होउछि जेते बेले भी न्यूबॉर्न बेबी आपन जन्म होई देखिथिबे आपन केतेले गोड़ छोटो होई जायथे गोटे हाथ छोटो होई जायथे। तो जे आपन ऑप्शन गेस करंतु ऑप्शन आपन कोन हबो फर्स्ट ऑप्शन रहउछि आपन राइट आंसर शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब। बेले अपर लिम्ब छोटो होई जाय तो केतेले लोअर लिम्ब माने केतेले गोड़ तो केतेले हाथ आपन छोटो होई जायथे। तो ऑप्शन होउछि आपन फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन when a drug bind to a silent receptor जेते बेले गोटे ड्रग बाइंड होय साइलेंट रिसेप्टर सहित कोन होय नो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स occurs, the drug gets metabolized, neuroendocrine hormone get released एवं DND changes occur। तो राइट आंसर आपनकर कोन रहउछि जेते बेले गोटे ड्रग बाइंड होय साइलेंट रिसेप्टर सहित आपनकर रहउछि नो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स occur माने फर्स्ट ऑप्शन होउछि आपनकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन any molecule which attaches selectively to a particular receptor or site is called। any molecule which attaches selectively to a particular receptor or site is called ताको कोन कहबा
चिराल ड्रग लिगैंड चिलेट एवं ट्रांसपोर्टर तो आपन जो राइट आंसर रोची आपन ऑप्शन 2 लिगैंड एवं आपन जो लिगैंड वर्ड टा कोठु आछि लिगैंड वर्ड आपन डिराइव फ्रॉम लैटिन टर्म माने होछि लिगारे माने कोन होछि आपन बाइंड लिगैंड होछि आपन गोटे लैटिन टर्म लिगारे जार माने होछि बाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 1 hypersensitivity reaction is also called टाइप 1 जो hypersensitivity reaction रहउछि ताको कोन कहै छै डिले hypersensitivity reaction एनाफाइलेटिक रिएक्शन साइटोलाइटिक रिएक्शन आर्थस रिएक्शन तो राइट आंसर आपन कोन रहउछि राइट आंसर रहउछि आपन देखंतु एनाफाइलेटिक रिएक्शन तो ऑप्शन बी होछि माने ऑप्शन 2 होछि आपन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्शन ऑफ हेपारिन इज एंटागोनिस्ट बाय the action of heparin is antagonist by minadion EDTA naloxone एवं प्रोटामाइन सल्फेट तो एक्शन ऑफ हेपारिन इज एंटागोनिस्ट बाय आपन राइट आंसर होछि प्रोटामाइन सल्फेट ऑप्शन 4 होछि आपन राइट आंसर हेपारिन को जे एंटागोनिस्ट करे ताको प्रोटामाइन सल्फेट कहै जाय नेक्स्ट ऑप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेकैनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू GIT which of the following is not a mechanism of drug absorption through GIT जेते बेले ड्रग एडमिनिस्टर करू GIT रे ड्रग एब्जॉर्ब ही ब्लड को जाय एवं सेठी अनेक प्रकार आपनकर मेकैनिज्म होय एठी जो आपनकर सब ऑप्शन रहउची को मेकैनिज्म एठी होयनी नॉट ए मेकैनिज्म रहउची तो ऑप्शन देखंतु पोर ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंडोसाइटोसिस एवं मेटास्टैटिस तो आपन राइट आंसर कोन रहउची एठी ऑप्शन रहउची मेटास्टैटिस ऑप्शन 4 होउची आपन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन Pharmacodynamics involves the study of following. Pharmacodynamics involves the study of following. Mechanism of drug action, biotransformation of drug in the organism, distribution of drug in the organism, excretion of drug from the organism. तो राइट आंसर आपनकर कोन रहउछि एठी राइट आंसर रहउछि आपनकर ऑप्शन ए मेकैनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन फार्माकोडायनामिक आपन माने समस्त जानि छथि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी एवं काइनेटिक रहउछि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग नेक्स्ट क्वेश्चन The drug on which people became dependent are called. The drug on which people became dependent are called. सही ड्रग जोथरे people depend ही जे ताको यूज करिबा पई यूज पई डिपेंडेंट हुए ताको को कोन कहै छै सही ड्रग को हम कोन कहबा इंडस्ट्रियल ड्रग सिंगल सेल ड्रग फार्मास्यूटिकल ड्रग एवं एडिक्टिव ड्रग तो राइट आंसर आपन को रहउछि एडी देखंतु एडिक्टिव ड्रग होछि आपन राइट आंसर द ड्रग ऑन व्हिच people became dependent are called addictive drug Next question. The science of detection, diagnosis and treatment of poison is called. Detection, diagnosis and treatment poison ताको कौन कहा जाए? Toxicology, clinical toxicology, toxicodynamic एवं toxicokinetic. तो राइट आंसर आपनकर कौन होबो एठी? राइट आंसर दोछि आपनकर ऑप्शन 4 clinical toxicology. ऑप्शन बी the science of detection diagnosis and treatment आपण माने समस्त जानि छथि डिटेक्शन करिवा पय डायग्नोसिस करिवा पय ट्रीटमेंट करिवा पय कोठी कि जबाको पड़े क्लिनिक को तडी आपण माने ध्यान देबे आपण क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी होची राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम नॉन कॉम्पिटिटिव नुहे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम increase km with no or little change in Vmax decrease km decrease Vmax increase Vmax तो राइट आंसर आपन कोन रहउसी ऑप्शन देखंतु डिक्रीज Vmax होची आपन को ऑप्शन थर्ड एवं आपन जो एंजाइम रहउची ए दी प्रकार रहउची गोटे नॉन कॉम्पिटिटिव एवं गोटे कॉम्पिटिटिव एडी आपन ऑप्शन रहउची डिक्रीज Vmax ऑप्शन थर्ड होची आपन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन A competitive antagonist affect the agonist dex and a non-competitive antagonist affect the agonist ताको हम कोन कहबा potency efficacy potency duration बा speed and duration तो राइट आंसर रहउची आपन potency and efficacy ऑप्शन फर्स्ट होची आपन राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन an agonist is a substance that interact with the receptor without producing any effect interact with the receptor and initiate changes in cell function producing various effect increase concentration of another substance product effect interact with plasma protein and does not produce any effect so an agonist is a substance that apno right answer rohuchi interact with the receptor and inhibits changes in cell function producing various effect so right answer apno कोठी rohuchi option 2 option B hochi apno right answer next question fastest acting receptor is ligand gated ion channel G protein coupled receptor enzymatic receptor nuclear receptor
तो राइट आंसर आपन रहउची लिगैंड गेटेड आयन चैनल ऑप्शन फर्स्ट होची आपन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस में इन्वॉल्व चेंजेस इन डेक्स ऑफ द ड्रग रिसेप्टर। फार्माकोडायनामिक टॉलरेंस में इन्वॉल्व चेंज इन डेक्स ऑफ ड्रग रिसेप्टर नंबर एफिनिटी फंक्शन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपन रेडी कोन हो कोंतु राइट आंसर रहउची आपन ऑल ऑफ द अबव। चेंजेस इन आपन नंबर भी हे पारे एफिनिटी भी हे पारे फंक्शन भी हे पारे। तो राइट आंसर रहउची आपन ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन G protein coupled receptor present on the plasma membrane has a bundle of DEX alpha helix 1 3 7 na 10। G protein coupled receptor present on the plasma membrane has bundle of DEX केते alpha helix आपनकर 1 हबो 3 हबो 7 हबो ना 10 हबो। तो राइट आंसर रहउची आपनकर 7 bundle of 7 alpha helix। नेक्स्ट क्वेश्चन all are second messenger except ई जो सब आपन रहउची ऑल आर सब सेकंड मैसेंजर रहउची गोटे नो एक्सेप्ट एटी गोटे रहउची आपन ताको आपन को बाछिबार अछि साइक्लिक एएमपी गुनेलाइल साइक्लेज डाइसाइक्लिक ग्लिसरॉल एवं इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। तो आपन सब एटी मैसेंजर रहउची ऑल आर सेकंड मैसेंजर गोटे कोटा नो आपन गुनेल साइक्लेज माने आपन जो रहउची ऑप्शन बी होउची राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन In order to perform the clinical trials for human being, the regulatory authority issue which license? Good clinical practice, new drug application, investigational new drug एवं none of the above। तो एटा आपन राइट आंसर कोन रहबो इशू which license को लाइसेंस आपन करो investigational new drug। नेक्स्ट क्वेश्चन higher the value of therapeutic index, higher the value of therapeutic index आपन करो ऑप्शन देखो lower the potency, lower will be the efficacy, higher the therapeutic action, safer is the drug। तो राइट आंसर आपन कोन होची एटी higher the value of therapeutic index, safer is the drug ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन the term related to the detection assessment understanding and prevention of adverse effect of drug is called ताको कोन करबा फार्माको एपिडेमियोलॉजी फार्माको इकोनॉमिक टॉक्सिकोलॉजी एवं फार्माको विजिलेंस। तो राइट आंसर होची आपन रेडी ऑप्शन 4 फार्माको विजिलेंस। The term related to the detection assessment understanding and prevention of adverse effect of drug is called pharmacovigilance। तो ये होची आपन फार्मासिस्ट एमसीक्यू फार्माकोलॉजी पार्ट 3 रो 25 एमसीक्यू सब आपन केमति लागला कमेंट माध्यम निश्चित कहिबे। जदि वीडियो सब भल लागुची लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबे।